सो सबसे पहले तो आई हैव अ फुल फेथ इन ऑल ऑफ यू दैट आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं मेंस में। ठीक है ना। आपका प्रिपरेशन हो गया है। ठीक है ना। आज 13th है एंड 15th से आपका तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो अभी से हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये बहुत 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 क्रिटिकल होगा। ठीक है ना। देखो जनरली एक होता है क्या कि जब आप अभी शुरू कर रहे हैं, मैं इसका भी एक ग्राफ बना करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। कि करना क्या है अभी। ठीक है ना। देखो ये मेंस जो है ना वो पीटी के जैसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है ना, यू विल हैव टू बी यू विल हैव टू बी एट योर पीक व्हेन यू रीच द एग्जामिनेशन। ऑलराइट। हाँ। सो क्या करना है अभी से, आज से ही, टुडे इज 13th। आज से लेट्स से whatever you are doing today, tomorrow you do not take a rest. It is not like that you have to take a rest. If at all you wanted to take a rest, na, in the night take 3 hours good, 3 hours rest, and that 3 hours should be properly, you should be blank, not doing anything. All right. So अभी से क्या करना है, अभी से यू विल हैव टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एटलीस्ट साइकोलॉजिकली, है ना। यू शुड बी रीचिंग द मैक्सिमम on exam day. This is very important. This is very important. On exam day you will have to be on your maximum. All right. That your maximum performance. Sometimes what happens na, sometimes what happens that let's say you have the capability to perform 100% in the test, and somebody goes to examination and he will come out after performing 200%. All right. After exam whatever happens, it doesn't matter. But what you have to do is to increase hour by hour. Hourly performance should be increasing. All right. Hourly, or let's say after 4 hours your performance should be increasing. After 4 hours your performance should be increasing. The most important thing, this is one thing, this is the psychological aspect. You are in no condition going to think that you are less than rank 1. All right. No condition. In no condition. Because see, the most important aspect of this preparation is not to give up psychologically. All right. So psychology should be what? Psychology should be at peak in the examination, for the examination. Do not give up. Do not give up in any condition. Whatever happens, your optional is not ready. It's okay. Your you are scared about GS4. It's okay. You are scared about essay. It's okay. But in no condition you are going to think that anything is not prepared for you. You are prepared for everything. You are prepared to crack this examination. All right. So psychological give up should not be there. Number one. All right. And second thing is what? Second thing is what happens? You see your pattern for last 6 to 7 days. Pattern. What you are doing? You are focusing upon revision more than that of writing. All right. And all of a sudden, when you go to the exam hall, in exam hall you will have to write, sit for 3 hours, and you will have to perform with 2 essays. All right. 2 essays. All right. So क्या होगा कि अगर if you are not writing something just before going to the examination hall, so that is going to create problem. So 14th night, that means tomorrow night you are going to write at least one essay. This one essay, the purpose is not to to perform in the essay. The purpose is to eliminate the writing hesitancy which is there. This is very important. And in the first paper, first paper becomes very, very important because it is essay paper. Some people will overthink in this paper, and some people will be very over relaxed in this paper. So in both the cases you will be harming yourself. So you will have to perform really good in the first paper with respect to time management, with respect to content management. This one is very important in first paper, because GS 1 2 3 4 I am sure about you that you are going to manage the time.
you are going to manage the time? 2-3 things. I'll just give you very quick brief. Number one, if you are encountering paper number 1 or any paper, GS paper number 1 is there, GS2 is there, GS3 or GS4 is there. GS4 will be lengthier this time. Mind it. So the crisis of time will always be there. So you should not be, let's say GS1 and GS2, there is a gap of 2 hours, right? 2 hours or 3 hours? How many? What is the gap? 2 hours. 2 hours, na? So Yes, sir. if GS1 is there, na, so GS1 is there. So what you have to do? You have to have the urgency. You have to keep in mind. देखो कंटेंट ध्यान में मत रखना, आप बस ये ध्यान में रखेंगे कि टाइम मिसमैनेज नहीं हो, ठीक है? You should have the urgency from the beginning. Time management should be your priority. All right, time management should be your priority. Acha, in the paper, the question, the exam, the invigilator gives you the question. You will have 5 minutes before starting the paper. So what will you be doing? You are going to browse the paper with the hawk eye, that you are browsing the paper and you are understanding ki, okay, there are 20 questions. Out of this 20 questions, 18 questions you know well, 2 questions you are not knowing well. All right, so this micro planning, which is question specific planning, sometimes there might be possibility that 16 questions you know well, 4 questions you do not know well, or for that matter there might be situations that 12 questions you know well, 8 questions you do not know anything about. That is absolutely okay. If you are not knowing anything, nobody else is knowing anything about that question, so you do not have to worry about that. That is not going to create a difference. That this is not the thing which from where the result will come. So even if 8 questions or 10 questions you are not very sure of, then also you plan. Let's say in 2 questions you do not have any clue. All right, so that means you calculate 7 multiplied by 2, 14 minutes. 14 minutes, if this is 10 marker, 14 minutes is what? Extra for you. So in that situation, what you can do, that this 14 minutes can be divided. All right, let's say you keep 4 minutes for these two, because देखो, never fight for 60% marks in those questions where you do not know anything. All right, since you are not knowing anything, so you cannot fight for, you be humble in that situation. You be humble and just write 1 page and fight for 2 marks, 20% marks, not more than 60% marks. So if you are fighting for 20% marks in that question, so the time should also be given equivalent to 20%, not for fighting for 20% marks you are going to give 7 minutes time for this. This is disproportionate. This is not the principle of equity. So if you are not knowing any question, be humble, write 1 page and move on. Rather, in that time, the time which you have saved, you should be using it in those questions where there is a need of analysis, where there you can create the diagram. So these kind of things can be there. So this is about GS1. This is very important. What happens, I'll tell you, this is happening with almost everyone. I'll tell you what happens, that you are going to write essay. You will choose one essay. Okay, this is one essay. All right, and or two essay you will write. And after then, since you will have 1 day gap, your mind will tend to evaluate, okay, what is the essay you have written. All right, and most likely, even if your essay is good, it is likelihood that you are going to find some fault in the essay, because you are going to discuss it with somebody and somebody will tell that, okay, I have written this thing in that, and you will say, okay, I knew that, but I could not write. All right, that means what? You will start judging yourself.
you judge yourself and you damage the next paper. This is very fundamental. All right, what will happen in paper 1, GS paper 1, in these 2 hours, let's say you are thinking about this paper 1, so you are damaging GS paper number 2 also. This is very, very important, that if if you have attempted one paper, that is GS1, or if you have attempted GS2, the the paper is over then and there only. All right, you do not carry any backlog, you do not carry anything out of that paper, you do not evaluate that paper in between. All right, or after GS paper 4 also, in the gap of 5 days, you will be troubled by, oh, I have wasted this attempt because of my essay is not good, or paper 1 is not good, paper 2 is not good, paper 3 is not good, paper 4 is not good. Do not discuss it with anyone. Do not discuss it. Okay? Do not discuss it. Nowhere you are not going to read, you are not going to discuss the paper with anyone. And mind it, this is very important. This is very important. You should be ready with that, what you are going to do in this, what? In this 2 hours before the examination, 2 hours before GS paper number 1. How you are planning to revise everything, how you are planning to remember things, the structure, the diagrams, what are the principles on the basis of which you are getting marks. These things you should be keeping in mind. ठीक है ना? Or GS2 में, for example, before GS2 you are going to revise article number, cases, Supreme Court judgment, committees, and so on. For GS3 you are going to revise data. You are going to revise data, you are going to revise certain diagram, some structure, these all things. You do not start doing this thing that I'm going to revise it end to end. You do not overburden yourself before the paper, GS paper 1. I'm telling you, these things happen. What will happen now? You push your limits just before the examination, and the situation will be like that you are so much motivated ki, oh, I am going to push my limits. I'm going to push my limits. And when you are going to push your limits before GS paper number 1, so by the time of evening, there might be situation that if half an hour, 30 minutes, your mind is not working, or you have given up psychologically कि सर मेरा तो अब काम नहीं कर रहा है, so that is going to be dangerous. That is going to be dangerous. So these things should be taken care of. Good hydration, what you have to take to the examination center, and what all things which are there, how many minutes before you have to reach there, in the middle, in the lunch, what you have to eat. All these you can plan well. All these you can plan well, and please plan it. Those who are having in UPSC, do not delay even by single minute. All right, center reaching some. I have seen some people, because of the jam or because of any other thing, they delayed it by 10 minutes, and they are not able to appear in the examination. They do not allow. They do not allow after the time. They do not allow. So whatever you do, you appear in the examination. These things cannot be ignored. These are very small things. These are very small things. The most important thing: do not carry over the whatever you perform in that. Whatever you perform in the paper, in the next paper. And the most important thing, anything you feel, let's say you are going to attempt GS paper number 1, anything you feel, or you are going to attempt GS paper number 2, GS paper number 3, or GS paper number 4. All right, anytime if you feel ki, okay, this is the situation, I am in a situation, there is certain problem which you are facing, any kind of problem, do not hesitate to call me. ठीक है ना? किसी को कॉल मत करना, आप मुझे कॉल कीजिए. ठीक है, GS4 के पहले या GS3 के पहले, GS2 के पहले, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी लग रहा है, साइकोलॉजिकली भी दिक्कत लग रहा है, यू जस्ट गिव मी ए कॉल. ठीक है ना? और रेस्ट ऑफ द टाइम आप मोबाइल ऑफ ही रखिए. डू नॉट टॉक अमंग द फ्रेंड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आई विल बी अवेलेबल. आप मुझे भी अवॉइड कीजिए कॉल कर रहा है. ठीक है ना? लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन में आ गए हैं, then you give me a call. I'll try in my limits the best possible solution
फॉर यू, है ना। तो इसके साथ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन कि दो क्वेश्चन में क्वालिटी दें, बहुत ज्यादा क्वालिटी दें, ठीक है, और 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, अटेम्प्ट करें, ठीक है, विथ एवरेज क्वालिटी, तो आप इसको चूज करेंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि एवरेज क्वालिटी के साथ हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट कम्स इन। व्हाट कम्स इन? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। और ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा चीज आप जानते हैं, ये सारा चीज आप जानते हैं। आप बस अभी से क्या करना है, आपको ये चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू रीच द पीक इन योर एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू परफॉर्म। देखो पीक एक ही होता है, यू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स यू आर एट पीक, समटाइम्स यू आर एट लो, ठीक है, लेकिन पीक एक ही होता है। तो आप एग्जामिनेशन में ही पीक पे पहुंचेंगे, और अपने आप को इस तरीके से आप ट्रेन करें, इस तरीके से आप बढ़ाएं कि आप एग्जामिनेशन में पीक पे पहुंचे, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, मुझे इतना ही बोलना है, ठीक है। बाकी आई हैव फुल फेथ इन ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि आपका मेंस क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है ना। द कंडीशन इज कि आप पूरा पेपर कर करके आए, ठीक है, और एग्जामिनेशन में कुछ बड़ा ब्लंडर नहीं करें। कई बार कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ए लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 ए के अंदर में। ये सब मत कीजिएगा, ये सब से फिर खत्म हो जाएगा, वो पूरा अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। ये सब मिस्टेक जो है वो एक्चुअली यूपीएससी फॉरगिव नहीं करता है ना। यूपीएससी फॉरगिव करता है, ठीक है। सर हाँ यस, बोलो। सर जब ऐसे का पेपर आता है जिस टाइम, मैं जैसे सबसे पहला एग्जाम होता है उस टाइम, हाँ हाँ तो हाँ। सर जब टॉपिक चूज करते हैं, अगर चूज करने में एकदम उस टाइम माइंड ब्लैंक हो जाता है सर। वो 5 मिनट उस टाइम खराब हो जाते हैं सर। मतलब या प्रेशर कह लो, कुछ कह लो, हमेशा ही ऐसा रहता है। हाँ 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 उसको हाँ। सर कैसे हैंडल करें सर? नहीं, वो करना पड़ेगा आपको हैंडल, ठीक है। ऐसे के पेपर में देखो, ऐसे के पेपर को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूज करने का आप प्रिंसिपल्स क्लियर रखिए ना, आप प्रिंसिपल क्लियर रखिए, ठीक है ना, कि आपका सिंगल डायमेंशन लेना है, आ? सिंगल डायमेंशन में, मतलब जो सिंगल हाँ, डायमेंशन में जिसको ऐसे हैं। आप एक वर्ड में तोड़ सके, जिसको आप बहुत डीपली समझ सके, जो जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहें जिस टॉपिक से, है ना। ये सारा प्रिंसिपल्स आप क्लियर रखिए कि कैसे चूज करना है। देखो गलत चूज कर लिए ना तो खत्म है कहानी, वहीं वो अटेम्प्ट ओवर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको जाकर के ऐसे का पेपर चूज करना है, ठीक है ना। और सबसे पहला के बाद फिर वही होता है कि आपका व्हाट इज कॉल्ड, अगर ये प्रोसेस में आप गड़बड़ाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। यस सर। तो वो यस। प्रिंसिपल्स यू नो दैट, आप उसको आप जो जानते हैं ना, अब मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, ठीक है। यू हैव गॉट दिस इन विद इन योर सेल्फ, ठीक है। अब बस तुम्हें परफॉर्म करना है वहां जाकर के, ठीक है। कैसे करोगे परफॉर्म? बस जाइए और बस इतना करना है आपको कि दिमाग में एक रत्ती भर भी गिव अप नहीं होना चाहिए। हर पेपर में वो 3 घंटा जो होना चाहिए ना, वो 3 घंटा बेस्ट 3 घंटा होना चाहिए आपके लाइफ का। ओके सर। ये अगर करके आ जाते हो तो आपका मेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं जानता हूं उस लेवल पे आप लोग हैं कि मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो 3 घंटा बेस्ट 3 घंटा होना चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल बात है, मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं आपसे, ठीक है। जितना नया क्वेश्चन आपके लिए होगा ना, उतना ही नया ये क्वेश्चन हर किसी के लिए। आपको लग रहा होगा कि कोई एक कमिटी का नाम एक्स्ट्रा बता दे कि हाँ भाई एक क्वेश्चन में मैंने तो ये लिख दिया, तो अरे भाई आपने एक ही क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। पेपर जो रिजल्ट आएगा ना वो ओवरऑल परफॉर्मेंस से आएगा रिजल्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में परफॉर्मेंस से रिजल्ट आ जाएगा या एक क्वेश्चन में परफॉर्मेंस से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक एक क्वेश्चन के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि एक एक क्वेश्चन में, वैसे आप 16 क्वेश्चन में एबव एवरेज थोड़ा सा परफॉर्म कर दिए, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर बाकी 4 क्वेश्चन में आप थोड़ा बिलो एवरेज भी परफॉर्म करेंगे तो दैट इज ओके, ठीक है ना, दैट इज ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ बोलो।
सर एक और जैसे मतलब ये बोला था कि जो स्टार्टिंग के आपने बताया था, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन और लास्ट के 3-4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हो, जो हाँ, बाद ये प्रिपरेशन करना, ठीक करते ये हैं। भी एक अप्रोच है और ये अच्छा अप्रोच है ना। देखो लेकिन सबसे सर पहले, जैसे बाई, हाँ सबसे एक मिनट पहले सर, आप जैसे स्टार्ट कहाँ करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? सबसे पहले स्टार्ट करो पेपर के बिगिनिंग से, है ना। 4 क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, फिर पेपर का एंड में 4 क्वेश्चन चले जाओ। और आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये 4 क्वेश्चन कितने देर में होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन इधर का है ना, 4 क्वेश्चन जहां पे 15 नंबर वाला शुरू होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए, ठीक, बिना माने, और ये सब ट्रांजिशन इतना स्मूथ होना चाहिए ना कि यू आर नॉट गोइंग टू थिंक, है ना, यू आर नॉट गोइंग टू थिंक, ठीक है। ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए। और लास्ट में ये लास्ट का 4 क्वेश्चन या बीच का 4 क्वेश्चन जो लास्ट में तो जो बचा हुआ है वो सब कर देंगे आप, समझ रहे हैं, है ना। तो सर माने जैसे, हर 10 नंबर का शुरुआत और एंड अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये इंश्योर करेंगे, ठीक है। और मिडिल में जहां पे 15 नंबर वाला शुरू होता है वो भी अच्छा हो, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। लेकिन किसी को ज्योग्राफी में ज्यादा स्ट्रांग है, किसी का आईआर ज्यादा स्ट्रांग है, तो कोई बात नहीं, आप आईआर का सबसे पहले लिख लो, ठीक है ना। जो स्ट्रांग पोर्शन है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। किसी को जीएस पेपर 2 में पॉलिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप कोई बात नहीं वहां भी लिख लो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये करके करना, ऐसा करने से थोड़ा क्या होता है ना, एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा जाता है, कोई भी बीच से नहीं पढ़ेगा आपका, समझ रहे हैं। सर मेरा डाउट है जैसे कोई स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में कोई सपोज एक आधा क्वेश्चन ना आता हो पूरा लिखना, तो कोई वहां बात पे नहीं, उस पे थोड़ा जहां टाइम नहीं ज्यादा आता लगाना है, ठीक रहेगा, या आगे मूव ऑन कर दें, सुनो मतलब मेरी बात, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में। जहां भी नहीं आता है, अगर मान के चलो एक क्वेश्चन नहीं आता है, वहां पे कभी भी आप उस क्वेश्चन पे टाइम देने का प्लान मत करो। वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ब्लफ करने का कोशिश नहीं करो। आप उस क्वेश्चन को बहुत हम्बली 1 नंबर या 2 नंबर या आधा नंबर के लिए फाइट करते हुए आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन में इंप्रेशन खराब होगा, कोई इंप्रेशन खराब नहीं होगा। इंप्रेशन खराब तब होगा जब आप ब्लफ करने का कोशिश करेंगे, और आपसे वे मोर स्मार्टर है एग्जामिनर, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और विजिबिलिटी का ध्यान रखेंगे, हैंड राइटिंग का तो छोड़िए, लेकिन विजिबिलिटी का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सारा नंबरिंग, सारा पैराग्राफ चेंज, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली विजिबल, ठीक है ना। जो मैं आपको बताया हूं विजिबिलिटी का ध्यान रखिएगा एकदम। और टाइम मैनेजमेंट का, ऐसा नहीं कि विजिबिलिटी के चक्कर में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर वो आप रिजल्ट से दूर चले जाएंगे। हम्म और कुछ बोलना है किसी का, और सर कोई क्वेरी? सर हाँ, ऐसे में एक दो लाइन हिंदी का यूज कर सकते हैं कोई कोड, क्योंकि बिल इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने पे वो कोड का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप नहीं, लेकिन हिंदी में लिखिए ना तो आप उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं बताया ना आपको, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, ये सब सब मैंने ऐसे नहीं, मैं एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप जैसे लिख रहे हैं बुभुक्षिता किम न करोति पापम, चाहे ऐसे में, पूरे ऐसे में 1 या 2 डायग्राम भी बना दिए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन आप जो भी ऐसा करेंगे कि हाँ आप हिंदी में लिख रहे हैं, चाहे आप मराठी में लिख रहे हैं, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसका एक लाइन में इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर दे दीजिए। हो सकता है कि द पर्सन हु इज इवेलुएटिंग योर कॉपी इज नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो फिर उस केस में तो दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं समझे। ओके। यस सर। अदरवाइज कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसमें लिखना है नहीं लिखना है कुछ, आपका प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होना चाहिए बस, ठीक है। और देखो मैं एकदम लास्ट मोमेंट तक आपके साथ में हूं, ठीक है। कभी भी आपको लगे, कभी भी आपको लगे कि हाँ कोई भी समस्या हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप बेहिचक मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। मैं मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपको वही 4 पॉइंट्स जो बताया हूं, वही 4 पॉइंट्स में फिर से बताऊंगा। वो आप जानते भी हैं, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन आपको उसी पे रहना है, टिकना है। लास्ट मोमेंट में कोई भी रैंडम स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब तो बिल्कुल नहीं, अब स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे आप? अब बस ये बनाइए स्ट्रेटजी की एग्जाम में कैसे आप अपना जो 100% है वो 150% पे जाए, 120% पे जाए, ठीक है।
समझ रहे हो? तो यही है स्ट्रेटजी। यस, और किसी को कुछ कहना है, बोलना है, पूछना है? थैंक यू सर। चलो ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, निहाल, दीपक, यस सर। संदीप और रजत, सारे लोगों पे मुझे फुल फेथ है, 100% फेथ कि अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम को मैनेज करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना? वो मैनेजमेंट कीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से। आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, सो सी यू ऑल। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट दिक्कत हो, ठीक है ना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। ऑल राइट, थैंक यू सर। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट।